Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Students, today we will start lesson 7 of science, the living and the non-living. Chapter 7: The Living and the Non-Living. When we look around, we find a wide variety of things like human beings, trees, cars, stones, birds, insects, clothes, papers and pencils. सो स्टूडेंट जब हम अपने चारों साइड देखते हैं, अराउंड देखते हैं, तो हमें बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें दिखाई देती है, जैसा कि एग्जाम्पल में ये बताए गए हैं. Human beings, trees, birds and insects are living things. Others like cars, stones, clothes, papers and pencils are non-living things. तो इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स होती है, जैसे एग्जाम्पल बताया गया है ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सभी लिविंग थिंग्स होती है. जबकि अदर लाइक जैसे कार, स्टोन्स, क्लॉथ, पेपर, ये चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स होती है. Both living things and the non-living things are made up of matter. We know that anything that has mass and occupies space is called matter. So, all living and non-living things have mass and they occupy space. All living things look different from one another, but they possess some common characteristics which differentiate them from the non-living things. Let us learn about the characteristics of living things, which distinguish them from the non-living things. तो बेटा हम सभी जानते हैं कि है प्रत्येक चीज़ जो कि किसी जगह पर द्रव्यमान घेरती है वो मैटर होती है. तो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, वे द्रव्यमान घेरती है, स्पेस घेरती है. तो वे सभी चीज़ें जो होती है हम कह सकते हैं कि लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से अलग दिखाई देती है. तो उनके अंदर कुछ कॉमन विशेषताएं दिखाई देती है जो दूसरों से उनको अलग करती है. तो यहाँ पर जो हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है दोनों के अंदर डिफरेंट करेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे. Characteristics of living things. All living things are made up of cells. A building is made up of bricks. So, a brick is the unit of construction. Likewise, all living things are made up of tiny cells. तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में देखेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स जो होती है वे सेल से बनी होती है. जैसे कि यहाँ पर आपकी वॉल का एग्जांपल दिया गया है. वॉल के अंदर जो है ईंटें लगी हुई होती है, ठीक है, ब्रिक्स लगी हुई होती है. तो जो ब्रिक्स होती है ये जो है हम कह सकते हैं कि जो वॉल है वॉल की सेल होती है, ठीक है. ऐसे ही जो ऑल लिविंग थिंग्स ये इनकी यूनिट होती है. तो ऐसे ही जो है हर जो लिविंग थिंग्स होती है वो सेल की बनी हुई होती है. Cell is the structural and functional unit of all living things. Some plants and animals consist of a single cell. They are called unicellular organisms. Amoeba, pyramid. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वन सेल के बने हुए होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, तो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. Bacteria, etc. are some common examples of unicellular organisms. Unicellular organisms are extremely small and are not visible to the naked eyes. They can only be seen with the help of a microscope. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉमनली बहुत छोटे होते हैं, जिनको कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. And thus are called microscopic organisms. Most of the plants and animals we see around us are made up of millions of cells. They are called multicellular organisms. तो मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं वो बेटा मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है. तो इनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. In multicellular organisms, the cells are not alike. Cells are of different sizes, shapes, and they perform different functions. Structural organization is found in living things. The cells in multicellular organisms are organized into specialized groups, which perform specific functions. A group of similar cells that perform a particular function is called a tissue. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स. इस पॉइंट में हम देखेंगे कि एक सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है किसी भी
हम ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती है जो सिमिलर टाइप की होती हैं वो एक तरह से पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करती है, तो यह इज कॉल्ड ए टिश्यू। Different groups of tissues together perform a function. A group of tissues which work together to perform a particular function in the body is called an organ. तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यू का एक ग्रुप जो कि टुगेदर एक साथ मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है वह हमारी बॉडी का ऑर्गन कहलाता है। Heart, lungs, and eyes are some organs of our body. These are made up of different tissues. A group of organs which perform a particular function in coordination with each other is called an organ system. तो सेम ऐसे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो कि परफॉर्म करता है कोई पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी विशेष कार्य को कोऑर्डिनेशन एक साथ सामंजस्य बैठाकर एक दूसरे का, ठीक है, तो वो ऑर्गन सिस्टम होता है। Organs like mouth, stomach, esophagus, liver, and intestine together form an organ system called the digestive system. Living things move. All living things show movement. Animals move from one place to another in search of food and shelter, and also to escape from their enemies. This movement is called locomotion. नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो होती है वो मूव करती है, तो जो ऑल लिविंग थिंग्स जो भी सभी लिविंग थिंग्स जो होती है वो मूवमेंट करती है। एनिमल्स जो होते हैं वो वन पैलेस टू अनदर पैलेस फूड के सर्च में जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा शेल्टर और ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, इसके अलावा अपने दुश्मनों के से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको लोकोमोशन कहते हैं। Animals like lions, giraffes, zebras and dogs move with the help of their legs. Animals like birds, flies and mosquitoes have wings to fly. Fish swim with the help of their fins. Plants are fixed to the ground. They do not move from one place to another. तो इसके अलावा प्लांट जो होते हैं वे ग्राउंड में एक जगह फिक्स होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव नहीं करते हैं। Plants can only move their certain body parts like leaves. The sunflower always turns towards the sun. Touch me not plant closes its leaves on touching. तो प्लांट्स के अंदर ओनली सिर्फ जो अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स, सिर्फ इनकी ही मूवमेंट होती है। इसके अलावा एग्जांपल बताया गया जैसे सनफ्लावर है जो होता है वो हमेशा सन की साइड ही टुवर्ड्स हो जाता है, मुड़ जाता है, और ऐसे ही जो टच मी नोट प्लांट्स होता है अक्रॉस लीव्स वो भी टच के साथ ही मूवमेंट करती है। Some non-living things like clocks, clouds and cars also move. Their movement is different from movement in living things as they move due to some external energy or force. तो इसके साथ ही बेटा कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि मूवमेंट करती है जैसे क्लॉक्स, क्लाउड्स, कार्स, ठीक है, ये भी मूव करती है, लेकिन इनके जो मूवमेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके जो डिफरेंट होते हैं वो मूव करते तो सम एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स, उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा से एनर्जी या फोर्स लगाया जाता है तो ही वो मूव करते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में नहीं आते हैं। Living things need food. Can we live without food? No, we cannot. We need energy to perform various activities like running, reading, and writing. We get this energy from the food we eat. Food is also required for growth and repair processes. तो नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं कि क्या भोजन के बिना हम जीवित रह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की, अपनी जो विभिन्न एक्टिविटियाँ होती है जैसे रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, तो ये एनर्जी जो है हमें फूड से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा फूड जो है हमें किस लिए आवश्यकता होती है, ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेसेस के लिए भी फूड की जो नीड होती है। All green plants prepare their own food by taking in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. So, green plants are called autotrophs. ऑल ग्रीन्स प्लांट जो होते हैं, हरे जो पादप होते हैं, वे अपना जो फूड होते हैं वे
स्वयं प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप इनकी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसके अंदर क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस के अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रोसेस के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिससे कि ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट जो होते हैं इनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। All animals get their food from plants and other animals. They are called heterotrophs. इसके अलावा जो ऑल एनिमल्स होते हैं, बाकी के जो जीव जंतु होते हैं, ये अपना फूड जो है प्लांट्स और अदर एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो ये हेटरोट्रोप्स कहलाते हैं। Animals like cows, deer, rabbits, and birds eat only parts of plants such as leaves, stems, roots, fruits, and seeds. Animals like lions, tigers, and leopards kill and eat small animals. Living things respire. Hold your breath for a few seconds. Can you hold it longer? No. Or तो सेम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर। तो इसमें बताया गया है बेटा कुछ देख लिए हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, तो क्या हम लंबे टाइम तक ऐसा कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। वाई? देखेंगे। living things breathe to live. All living things inhale, take in oxygen-rich air and exhale throughout carbon dioxide. तो सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रेथ करती है, सांस लेती है। तो सांस लेने के अंदर हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसको बाहर निकालते हैं। Rich air. The process of inhaling and exhaling air is called breathing. Animals like tigers, cats and dogs, along with human beings, breathe through lungs. Insects like cockroaches, flies, mosquitoes, and grasshoppers breathe through air holes, spiracles present on the surface of their bodies. Fish breathe through gills. They absorb dissolved oxygen from water. Plants breathe through tiny pores present on the surface of their leaves called stomata. Aquatic plants take in dissolved oxygen from water. All organisms respire to get energy. Respiration is the process of breaking down of food in the body of an organism. With ऐसे ही बेटा सेम एनिमल जो है वो भी ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो जल में जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिश है, ये जो है वाटर में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसको सांस के द्वारा लेते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, यानी कि उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। the help of oxygen to release carbon dioxide, water, and energy. Carbon dioxide and water vapor are given out through exhalation. Food plus oxygen, respiration, gives energy plus carbon dioxide plus water. Living things excrete. We know that all living things take food. A part of food we eat is utilized for energy. तो सभी लिविंग थिंग्स जो है वो भोजन खाती है और जो फूड खाती हैं उनसे वो एनर्जी ऑब्जर्व करती हैं। The unused part of the food is the waste material. Our body also produces waste materials in other life processes like respiration. The waste materials, being poisonous, need to be removed from the body of organisms. तो हमारी बॉडी के अंदर हम एनर्जी लेने के बाद फूड से जो वेस्ट जो थिंग्स जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। The process of removal of waste materials by a living organism from its body is called excretion. The waste materials are excreted as urine, feces.
वेस्ट मटेरियल निकालने की जो प्रोसेस होती है लिविंग थिंग्स में, ये एक्सक्रीट कहलाती है। And sweat. Body organs like kidney, lungs, liver, and skin take part in the removal of wastes. Carbon dioxide produced by animals during respiration is released from the body through exhalation. Plants also release carbon dioxide during respiration by tiny pores called stomata. Plants also produce some other waste products. These waste products are either stored in their different parts like leaves, bark, and fruits, or are removed as various secretions like gums, resins, and latex. Plants store waste products in such a way that they do not harm the plants. Living things grow. Look at your pictures when you were an infant. You were so small. Now look at yourself. You are grown up and increased in size. All live. नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो। तो हम सब जानते हैं बेटा लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। ह्यूमन जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद वो ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो बड़े होते जाते हैं। Living things grow on their own. Growth is actually an increase in size of the body. A tiny seed grows into a baby plant, and after some time, it grows into a big plant or tree. Plants continue to grow throughout their life. A small puppy grows into a dog. A chick comes out of an egg and grows into a hen. Animals grow up to a certain age only. They stop growing after they have attained a certain size and shape. You will also grow for a few more years, and then you would stop growing. You may say that some non-living things, like a crystal of sugar, grows in size. This growth is external, that is, due to addition of substances from outside. You grow because of multiplication and growth of cells inside your body. So, the growth in living organisms is internal, that is, from inside. इसके अलावा बेटा हम देखते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो कि ग्रो करती है अपने साइज के अंदर, जैसे शुगर के क्रिस्टल हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है एक्सटर्नल होती है, बाहरी तौर पर होती है। इसके अंदर कुछ एडिशनल सब्सटेंसेज होते हैं, सब्सटेंसेज इनको ऐड कराए जाते हैं बाहर की साइड से, तो इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो सेल्स इनसाइड योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर की कोशिकाओं में होती है। Living things have a definite lifespan. We know that all living beings start from a single cell. All living organisms are born, grow into adults, produce offspring, get old, and finally die. So, all living organisms follow a definite pattern of birth, growth, reproduction, aging, and death. The time period for which a living organism remains alive is called its lifespan. All living things. तो लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पैन। तो एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर की कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो रिमेन्स अलाइव, वो जिंदा रहना छोड़ देता है, उसके अंदर जो उसके जीवन की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा टाइम वो कंप्लीट हो जाता है, तो ये कॉल्ड इट इज लाइफ स्पैन। Definite pattern of birth, growth, reproduction, aging, and death. The time period for which a living organism remains alive is called its lifespan. All living things have a definite lifespan. Lifespan is different for different organisms. Organisms, lifespan, organisms, lifespan. Bacteria, 15 to 20 minutes. तो यहाँ पर बेटा जो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनका लाइफ स्पैन दिखाया गया है, ये आप लोगों को नोट करना है। Dog, 16 to 18 years. Mayfly, 1 day. Lion, 20 to 25 years. Housefly, 1 to 4 months. Ostrich, 45 to 50 years. Rice plant, 4 months. Human, 65 to 80 years. Rat, mouse, 2 to 3 years. Tortoise,
120 to 150 years. Squirrel, 8 to 9 years. Banyan tree, 200 years or more. After completion of life cycles, living things die. Biologically, things are classified as living, non-living, and dead. Dead things are the remains of living things. For example, furniture like table and chair are made up of wood. Wood was once the part of a tree and thus is a dead part of the plant. Other examples of dead things are leather, bone, tusk, etc. Living things reproduce. All living things give birth to young ones of their own kind. That is, all living things reproduce. नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट। ऑल लिविंग थिंग्स है जो जन्म देती है अपने जैसे ही ऑन काइंड अपने जैसे ही प्रकार के हम कह सकते हैं सब्सटेंसेज अपने जैसे ही प्रकार के टाइप के जो है थिंग्स को जो है जन्म देती है, तो ये रिप्रोडक्ट होता है। Animals like cows and cats give birth to young ones. Cows reproduce by giving birth to calves, whereas cats give birth to kittens. Human beings reproduce by giving birth to babies. Some baby animals like birds, frogs, snakes, and mosquitoes hatch from eggs. Plants usually reproduce through their seeds or from other parts of the plant like stem and leaves. Living things respond to stimuli. What happens when anyone pricks your hand with a small pin? You feel pain and move your hand away quickly. Here, pricking with the pin is the stimulus and the quick withdrawal of your hand is the response. When we touch the leaves of Mimosa pudica plant, it quickly folds its leaves. Here, touching is the stimulus and folding of leaves is the response. Stimulus is any change in the surroundings of an organism to which it responds. All living things. नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी स्टिमुलस जो होता है एनी चेंजेस इन द सराउंडिंग, हमने चारों साइड जो भी कोई चेंजेस होता है तो उसके लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ रिस्पॉन्ड देते हैं, कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। Respond to stimuli like temperature, touch, light, sound, and smell by moving towards it or away from it. No more. Reproduction leads to an increase in the number of individuals of a species. In the absence of reproduction, the organisms would perish after completing their lifespan. So, reproduction ensures the survival of a species. So, all living things can feel and are able to perceive the changes occurring around them. This ability to respond to any external change is called sensitivity. Think. The shoot of a plant grows towards light and roots of a plant grow towards gravity. Can you name the stimuli and response in these cases? Viruses, entities between living and non-living. Viruses are microorganisms which have the characteristics of both living and non-living things. They are just like any other non-living thing outside the body of a living thing. They can grow and multiply only inside the living things. Viruses are often considered the connecting link between the living things and the non. नेक्स्ट है बेटा वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर की लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की विशेषताएं होती है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे बिहेव करते हैं कब, जब किसी की बॉडी के आउटसाइड होते हैं, ठीक है, तब तक ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन ये किसी की बॉडी के अंदर, किसी भी थिंग्स की बॉडी के अंदर एंट्री करके ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर ये जो क्या लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करते हैं। तो वायरस जो होते हैं बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में लिंक का काम करते हैं, कनेक्टेड लिंक। Living things. Parameter. Living things, non-living things. Cells.
living things are made इस चार्ट में बेटा आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के अंदर डिफरेंट बताया गया है, आप लोगों को ये लर्न करना है। up of cells. Non-living things are not made up of cells. Movement. Living things can move on their own. Non-living things cannot move on their own. We have to move them. Food. Living things need food. Non-living things do not need food. Respiration. Living things respire. Non-living things do not respire. Excretion. Living things excrete to get rid of waste products formed in the body. Non-living things do not excrete. Growth. Living things grow. Non-living things do not grow. Lifespan. Living things have a definite lifespan. Non-living do not have a definite lifespan. Reproduction. Living things reproduce themselves. Non-living things do not reproduce. Response to stimuli. Living things respond to stimuli. They feel and react. Non-living things do not respond to stimuli. सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ ए क्रिस्टल डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ए बेबी बर्ड। आंसर आ जाएगा, द ग्रोथ ऑफ ए क्रिस्टल इज एक्सटर्नल ड्यू टू एडिशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम आउटसाइड। द ग्रोथ ऑफ बेबी बर्ड इज इंटरनल फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स। Next question, why do living things respire? Answer, all the living things respires to get energy. Next question, how is a lion different from a people plants? Answer, a people plant can make its food through photosynthesis, whereas a lion does not make its own food and gets its food from other animals. Question number 4, name the structural and functional unit of living things. Answer, cells. Question number 5, name a microscopic organism. Answer, amoeba. Next question, name the two waste products is in animal and plants. Answer आ जाएगा, waste of plants, gums, resins and waste of animals, urea, carbon dioxide, uric acid. Next question, name the process by which living things obtain energy from food. Respiration. Which part of the leaf takes part in exchange of gases? Stomata. Next question, name any two animals which product by giving birth to babies through hatching of their eggs. Dogs, cows and hen, lizard. Next exercise है short answer question. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what is meant by life span? What is the average life span of humans? The time period of which a living organism remains alive to is called its life span. The average life span of human is 65 to 80 years. Next question, which of the following were once a part of living things? Leather, wool, electric bulb, salt, mango, wooden table, metallic basket. Answer है, leather, wool, mango and wooden table were once a part of living things. Question number 3 है, what is meant by respirations? Why is respirations essential for living organism? तो respirations is the process of breakdown of food in the body of an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. Respiration is essential for all living things because it provides energy to living things to work, move and. Next question है, Manoj sees a dog in his garden. He picks up a stone and throws it at the dog. The dog gets hurt and within no time bites Manoj's leg. Manoj's friend Arjun takes him to the doctor. The doctor immediately gives him first aid and injection. Manoj, तो आंसर आ जाएगा, throwing stone on dogs is stimulus and biting of dogs is a response. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आंसर आ जाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू डिफरेंट
organs. Animals like tigers, cats, dogs, along with humans breathe through lungs. Insects like cockroach, flies, mosquitoes, and grasshoppers breathe through air holes. Spallicus. Next question, animals grow only till a particular age, whereas plants grow throughout their life. Justify. All living things grow, they become taller and bigger on their own. Growth is actually an increase in size of the body. All the animal grow up to a certain age only. After attaining certain size and shape, they stop growing. Humans also grow of a few time. Next question, a plant grow towards sunlight. Mention the stimulus and this response. Sunlight is a stimulus and bending of plant towards sunlight is a response. Next question, what is meant by stimulus and sensitivity? The stimulus is any change in the surrounding of an organism to which it responds. The ability to respond to any external change is called sensitivity. Next question, distinguish between tissues and organs. A group of similar cells that perform a particular function is called a tissue. A group of tissue that work together to perform a particular function in the body is called an organ. Question number 6, what is the common feature in living things and non-living things? The common feature in living and non-living things is that they are made of matter. Next question, give any 4 difference between living things and non-living things. First, living things are made up of cells. Second, living things can move on their own. Third, living things have a defined lifespan. Fourth, living things reproduce themselves. अब नॉन लिविंग थिंग्स जो है बेटा बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें लिविंग थिंग्स करती है वो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें नहीं करती है, तो आप इसका अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीड इज पुट इनसाइड द सोइल, इन विच डायरेक्शन विल द स्टेम एंड रूट्स ग्रो? द रूट विल ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स while grow on downwards. Next question है, are wheat grains stored in the gunny bags living? Why not? The grain stored in gunny bags are non living, but when they get attached to the plant they were living.